वीडियो ऑन करो। Good evening, all medical officers. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Yes, sir. You all are requested to please keep your mic mute because it will create noise. Okay. प्रकाश पांडे जी आ चुके हैं शायद, मैं देख पा रहा हूँ. थैंक यू प्रकाश पांडे जी. आज शायद एक प्रेजेंटेशन आपकी होने वाली है. प्लीज अनम्यूट कर लें थोड़ा सा. डेफिनेटली सर. ओके, थैंक यू सो मच. बहुत जरूरी था, शुरुआत आप सही करते हैं. ठीक है, तो वी आर हियर विद आवर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रोफेसर एनके अग्रवाल सर. कुछ भी कहना कम है. तो ये बड़ा ही फॉर्चुनेट है कि आप लोग को वहीं बैठे बैठे आज से जो भी के प्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलेंगी. सर से आप लोग थोड़ा सा आज पढ़ लीजिए एंड इसके बाद 2 और लेक्चर्स कंटिन्यू होंगे. तो आज ये हम लोग शुरुआत करेंगे सर के पहले लेक्चर से. तो सर बस थोड़ी देर में शुरू करेंगे अब, एंड उसके बाद सर के लेक्चर के बाद प्रेजेंटेशन होगी डॉक्टर प्रकाश पांडे जी की. उसके बाद फिनिश करते समय फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए. ठीक है, तो सभी लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा प्लीज, और कोई भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे तो आप प्रेजेंटेशन के बाद कर सकते हैं. थैंक यू. You are not audible, sir. Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes. Yeah. So good afternoon, everybody. This is first eco presentation of from the Regional Resource Center Telemedicine from BHU Varanasi, and this will be a bilingual presentation, and I hope everybody will be comfortable with the presentation. And after a small presentation, we will move to the case presentation by Dr. Pandey. So I am presenting this slow चल रहा है. So today we have started with a problem which we usually encounter commonly, and we are able to see, and the disease is rising very fast in our population. So we are seeing a lot of cases, and this is also being followed up in villages and semi-urban townships. So we are having cases of diabetes all throughout in and around your PSC. So many of these cases are very early and can be managed at your center. To empower patient and the doctors, we will be going through this small module, and then we listen to one of the presentation from yourself. As you know, diabetes is basically diabetes has 2 parts: diabetes and mellitus and diabetes insipidus. So diabetes mellitus we will be discussing, and diabetes mellitus is an increased glucose concentration in blood. So this is what we usually think, that this is a increase in the glucose concentration in blood. And when we further classify diabetes, it could be type 1 diabetes,
This is basically due to autoimmune beta cell destruction, usually leading to absolute insulin deficiency. We can control glucose up to 5% of insulin levels, and if we are not having even 5% of insulins, then the type 1 diabetes ensues. 5% भी नहीं बचता इंसुलिन, तब हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है, और धीरे कभी कभी ये बहुत धीरे धीरे करके कम होता है, तो इससे लेटेट ऑटोइम्यून डायबिटीज होती है. देन हम लोग देखते हैं जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज देखते हैं, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज अभी भी बढ़ रही है, बट कुछ केसेस दिखाई देते हैं. हम लोगों के पास ज्यादा आते हैं क्योंकि सारी जगह से आते हैं, बट टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन, और ये धीरे धीरे करके बीटा सेल का इंसुलिन सिक्रीशन कम होता है और बैकग्राउंड में इंसुलिन का एक्शन कम हो रहा होता है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ ineffectiveness of insulin, but the body tries to produce more insulin to control diabetes. When we can increase the insulin production by drugs or by any means, and it is more than the normal supranormal levels, then it can control. If that can also be insufficient, then we can have that problem. Then there are specific types of diabetes due to other causes like monogenic diabetes, neonatal diabetes, and maturity onset diabetes of the young, diseases of the pancreas such as cystic fibrosis and pancreatitis, and drug or chemical induced diabetes. So in that scenario, these are the possible types of diabetes. Like drug induced diabetes, recently use of glucocorticoid was high, and we got diabetes in patients who had diabetes with COVID. So in that scenario also glucocorticoid induced diabetes could be there, and HIV induced diabetes could be there, or so in that and organ transplantation, some drugs are being used, so they can induce diabetes. Now gestational diabetes, this is a one class of diabetes where diabetes is diagnosed in the second or third trimester of pregnancy. That was not clearly beforehand. The diabetes was not before the patient went into pregnancy. So गर्भावस्था शुरू होने से पहले डायबिटीज होती है, तो उसको हम डायबिटीज विथ प्रेगनेंसी कहते हैं, और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं जब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज होती है. डायबिटीज का विस्तार जब होता है तब ये शुरुआत से नॉर्मल से प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज में जाती है. तो नॉर्मल होता है 100, और तो उससे 100 से 125 के बीच में प्री डायबिटीज होती है. और अगर हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जैसे 75 ग्राम ग्लूकोज, तो 2 घंटे बाद आपका 140 से 200 के बीच में हो, या अगर हम A1C कर रहे हैं तो A1C 5.7 से 6.4 के बीच में हो. तो इन सब स्थिति को हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं. और डायबिटीज, प्री डायबिटीज, फिर नॉर्मल, प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज, इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टाइप 1 डायबिटीज भी शुरुआती स्थिति में ऑटोइम्यूनिटी विथ नॉर्मल ग्लाइसेमिक और प्री सिम्टोमेटिक रहता है, और उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमको ऑटो एंटीबॉडीज मिलते हैं. और स्टेज 2 में अगेन उन लोगों में प्री डायबिटिक स्टेट मिल सकता है, और फिर जब क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, जब पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, तब उनको सिम्टोमेटिक हो जाते हैं और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हम मेजर करते हैं. द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अगेन इज fasting is more than 126, 2 hour postprandial is more than 200, or A1C is more than 6.5.
So these are the criteria for diabetes. A1C हम अगर डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए लेते हैं तो वी शुड नो दैट ये नेशनल NGSP स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, और इसमें हम ये भी मान के चलें कि कभी कभी ऐसे का इंटरफेरेंस भी होता है और डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं जिससे A1C की वैल्यूज बदल सकती हैं। हमको क्लियर क्लिनिकल डायग्नोसिस कब मिल सकती है? जबकि पेशेंट इज इन हाइपरग्लाइसेमिक क्राइसिस लाइक 600-700 ग्लूकोज है, या पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स है शुगर बढ़ने के और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज इज मोर देन 200. Diagnosis requires two abnormal test results when either from the same sample or in two separate test samples. If using two separate test samples, the second test, which may either be a repeat of the initial test, like two blood sugars, or one A1C or one blood glucose. If A1C is 7 and repeat result is 6.8, then the diagnosis of diabetes is confirmed. Like both are more than 6.5. And if two different tests such as A1C and FPG are both above the diagnostic threshold from the same sample or in two different test samples, this also confirms the diagnosis. So two different tests also can make you diagnose diabetes. Then discordant results from two different tests. Suppose you get a test which has two different tests values, and one is towards the cutoff and the other is not the cutoff. So so the test result that is above the diagnostic cut point should be repeated, and the diagnosis is made on the basis of the confirmed test. For example, if patient meets the diabetes criteria of A1C, so two results more than 6.5 but fasting is less than 126, then the person should nevertheless be considered to have diabetes. There could be analytic variability, like suppose you have taken a glucose sample, put it in the vial, and this contains fluoride, and if the you are putting in a volume of blood more than the volume suggested by the lab, suppose say basically the fluoride amount in glucose vials is for 2 ml. If you put in 4 or 5 ml, the fluoride content is less as compared to the blood volume. So it may not suppress the glycolysis, so it may change the glucose value. So if the glucose vial is kept for a long time, you may get a lower value of glucose. Then, as I told you, that there are possibilities of the abnormal tests like A1C. So plasma glucose be spun and separated immediately. That there could be margins of the diagnostic threshold. Like if the patient has just 126, so we may discuss the signs and symptoms with the patient and repeat the test in 3 to 6 months. So if the patient has just borderline values, then we can have repeat. Coming to the first less common of diabetes, that is type 1 diabetes. It is an autoimmune antibody detectable in most patients, more than 3 years to mostly up to 30 years. Majority present with ketone in urine or plasma with or without acidosis. Currently best treated with insulin. Insulin is the treatment. There could be idiopathic type 1 diabetes where unknown etiology, no antibodies, there is permanent insulinopenia. Patients could be African and Asian ancestry, and there could be intermittent diabetic ketoacidosis. So these are all also called possibly ketosis prone diabetes. Okay, so testing should be considered for patients of diabetes in asymptomatic adults.
BMI is more than 25 kg per meter square in Asians or like first degree relatives with diabetes, high risk ethnicity, history of CVD, hypertension that is more than 140/90 or therapy for hypertension, HDL cholesterol level, and women with polycystic ovary syndrome, physical inactivity, other clinical conditions associated with insulin resistance like severe obesity, acanthosis nigricans. Patients with A1C more than 5.7% should be tested yearly. Women who are diagnosed with GDM should have lifelong testing at least every 3 years. For all other patients, testing should begin at 45 years. Then for all other patients, testing should begin at 45 years. For if the results are normal, testing should be repeated at minimum of 3 years interval with consideration of more frequent testing depending on the initial results and risk status. HIV patients should also be tested. Then in adolescents and children, the clinical testing should be done when they are very obese, like more than 85% overweight and more than 95 percentile is obesity. So they should be tested. Maternal history of diabetes or GDM during the child gestation, family history of type 2 diabetes in first or second degree relatives, race, ethnicity, like Asians, we are Asians, so there could be there. Then signs of insulin resistance or conditions associated with insulin resistance, like acanthosis nigricans, hypertension, dyslipidemia, polycystic ovary syndrome, or small for gestational age, birth weight. There are a few monogenic diabetes. I told you that maturity onset diabetes of the young or neonatal diabetes. Here I would like to point out that there are some specific specific diabetes where you can have responsive to sulfonylureas. So not all neonatal diabetes may require insulin. So, but these sulfonylureas will be tested in a controlled environment like institutions, but they can have therapy of sulfonylurea. Then exocrine pancreatic dysfunction, like structural and functional loss of glucose normalizing insulin secretion in the context of exocrine pancreatic dysfunction, and commonly diagnosed as type 2 diabetes, like pancreatitis, neoplasia, cystic fibrosis, hemochromatosis, fibrocalculus pancreatopathy, genetic disorders, idiopathic forms, loss of both insulin and glucagon secretion is there, and there could be microvascular complications similar to the type 2 diabetes. Then islet autotransplantation can be done to retain insulin secretion. So this is the possibility for pancreatic diabetes. GDM, again, we may have one-step strategy or two-step strategy. Like we can give 75 gram oral glucose tolerance test when patient is fasting and 1 and 2 hours, and then fasting could be 92, 180 and 135. So this is the most usual followed, and fasting is 92, and if 1 hour is more than 180 or 2 hours is more than 153, then we can label that person as a suffering from GDM. There should be test for undiagnosed pre-diabetes and diabetes at the first prenatal visit, test for gestational diabetes mellitus at 24 to 28 weeks of gestation, and 4 to 12 weeks postpartum for pre-diabetes or diabetes. They should have lifelong screening for if they have not yet developed the diabetes, and those who have found to have pre-diabetes should receive intensive lifestyle interventions and or metformin to prevent diabetes. So how will prevent diabetes? Like 7% loss of initial body weight and increase moderate intensity physical activity,
A variety of eating patterns can be considered based on patient's preference. Certified technology-assisted diabetes prevention programs may be effective. Metformin therapy for prevention of type 2 diabetes should be considered in those with pre-diabetes, especially for BMI more than 35, or those aged less than 60 years, or women with prior gestational diabetes. Long term of metformin can cause vitamin B12 deficiency, anemia, or peripheral neuropathy. Pre-diabetes is associated with heightened cardiovascular risk. Therefore, screening for and treatment of modifiable risk factors for cardiovascular disease are suggested. This is the circle of where we can go for the like when the patient enters, that assess the key patient characteristics, current lifestyle, comorbidities, clinical characteristics, cultural and socioeconomic context. Then consider the specific factors that impact the choice of treatment, like A1C, impact on weight and hypoglycemia, side effect profile of medication, complexity of regimen, frequency and mode of administration, how does it fit into their daily routine, how can they adhere or persistent, then how much it is costly, and patient has the accessibility of the medication. We can make a management plan and agree to management plan, like specific, measurable, achievable, realistic, and time limited, that is SMART goals. Then implement the management plan. Ongoing monitoring should be there, and review and agree on the management plan. Then we should also be frequently touching upon the past medical history, family and personal history, interval history, that is change in medications since last visit, behavioral factors, medications and vaccinations, technology use, social life assessment, so how they care and who are the people who can help them. We do physical examination, including height, weight, blood pressure, orthostatic blood pressure measures when indicated, fundus, thyroid palpation, skin examination, comprehensive food examination, screen for depression, anxiety and disordered eating, because patients may have just abnormal eating because of the depression and anxiety they have of the disease. Patients with a higher age, elderly age, they may have cognitive impairment, then assessment for functional performance. Patients may have measurement of laboratory values like A1C, lipid profile, liver function test, urinary albumin creatinine ratio, creatinine and estimated GFR, TSH in patients of type 1 diabetes, vitamin B12 and potassium levels when they are on ACE inhibitor, ARBs or diuretics. There should be assessment for cardiac and chronic kidney disease, assessment of hypoglycemia risk. We should tell them the goal, which goal they have to achieve, and we have to tell them the plan of therapy, how and when they can have hypoglycemia. This should be assessed, like use of insulin or insulin secretagogues, impaired kidney hepatic function, longer duration of diabetes, frailty, old age, cognitive impairment, impaired counter-regulatory response, intellectual disability, polypharmacy, patient can have, or alcohol use. So these are all, patient may take alcohol and did not take any other eatables. So then dry calories of alcohol creates hypoglycemia. Then patient with type 1 diabetes should be screened for thyroid disorders and celiac disease and cognitive impairment. And sometimes if referrals is required for eye care, women for reproductive age, medical nutrition therapy, self-management education, dentist, mental health and audiology if required,
and the patients should also be going for non-alcoholic steatohepatitis checkup if there are elevated enzymes. A mental health provider may be required once the patient are suffering ongoing mental disease. We basically have a different goal targets when the patients are having different scenario, like risk of potentially associated with hypoglycemia. So we may have if the risk is very high, the stringent glucose control is not required. Like disease duration is more, you have less stringent glycemic control. Life expectancy is short, then you cannot give a more stringent glucose control. If there are comorbidities, then the stringent control is not there. Established vascular complications are there, then we have less stringent glucose control. Patient preference, if the patient is less preferably for the glucose control, or patient is not motivated, there is no self-care, then we should not give a very tight glucose control. And if the resources and support are limited, then we should also not give a very tight glycemic control. So these are all changes we can give to the control of glucose. Thank you. ये क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? कहाँ गया? लेक्चर ओवर हो गया सर का. हाँ, my lecture is over. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. दिख नहीं रहा. Thank you, sir. Now, a case will be presented by Dr. Prakash Pandey ji. Prakash Pandey ji, please आप केस प्रेजेंटेशन अपना शुरू करें. उसके बाद उस पे डिस्कशन होगा. हाँ, तो प्लीज. थैंक यू. Yes, hello, sir. My name is Dr. Prakash Pandey. I am presenting the case of a person who comes to me for just a symptom of weakness and frequency of urine. Am I audible, sir? No? Okay, what is the age of the patient? Patient age is, sir, 40 year male. 40-year male patient come to me for the symptom of weakness and frequency of urine. And I am going to investigate the patient. But now his present illness, history of present illness is only that patient was asymptomatic, means just not a exact symptom of diabetes. And 1 year back he is purely asymptomatic. And gradually he developed weakness and frequency of urine. Now he comes to me in OPD with the general symptom of asthenia. Hello. Yes, sir. No other any past medical history, relevant past medical history. And the patient is when he comes to me, he is on medication of tablet glimepiride 1 milligram BD, metformin 1000 milligram BD, and vildagliptin 50 mg BD, 50 mg BD. Is and he's from a middle class family, and sedentary life is going on, and no other relevant social history. In family history, his mother is diabetic, and she's on moderate control on OHA. His father is all okay.
no any diabetes or hypertension or any coronary artery disease. Now, sir, I have examined her all the systems. His CVS is normal. Dr. Pandey, Height. Dr. Pandey, Yes, just hold on. yes. With this history, why do you think he is diabetic? Sir, sir, he's on medication, sir. When he comes to me, he's on medication from some other doctors. Okay, so he is already. He has prescribed the medicine. So he is a diagnosed case of diabetes. Yes, sir. Now, But yes, sir. Now we have labeled him as which type of diabetes? Sir, according to me, sir, it is type 2 diabetes. Some case of type 2 diabetes. Why do you say it is type 2 diabetes? Sir, his maturity of onset is late onset, around 40-year old, and he's means, sir, obese. Okay. He's obese so also. We have not examined yet. We are just having a history. No, I have examined, sir. I have examined, sir. We have not listened to. I'm going to tell about the examination. No, we have not yet listened to your examination. We are just discussing the history. Okay, sir. So in history, you said that he is a 40 years old male, more of a sedentary life, presented with a weakness and asthenia. Weakness or asthenia is the same thing. So yes, he has presented to you with weakness, and he has and frequency of urine. Family history of diabetes, and he is on currently therapy for diabetes. So this is a case probably of type 2 diabetes, because he's a 40 years male and a family history of diabetes. Yes, sir. But there is a glitch, sir. Because the patient is not on control. His sugar is, when he present to me. So then you have to find out many more things in history. Yes, sir. So you said the patient came to you with weakness and frequency of urine. How long has he been suffering from this problem? 1 year, sir. 1 year. 1 year. So has he been diagnosed only for 1 year, or he has been diagnosed much before 1 year, and the problem is this current problem is for 1 year? No, sir. His present symptom is from 1 year, and he is diagnosed 3 years back, or 3 months back. Sorry, sir. 3 months back, he's put on medication. Okay. So for last 9 months, he was just he was not trying to consult anybody, but he had a problem for 1 year and consulted 3 months back and was put on medications, and still he has problems. Now we have to find out by history the complications which could be with the diabetes. Okay. Is he a case of simple diabetes or diabetes with complications? No, sir. Simple diabetes, no any complications. All the systems are normal. Once you have completed the history, you should tell us that there is no history suggestive of how do you rule out the complications. What would you ask for ruling out complications? One by one. Like suppose you want to rule out a vision problem, so you will ask them that do you have any problem in vision, or is there any change in glasses, frequency of change in glasses, or you have a problem in seeing in the daylight, but it improves in the night, because there is a central cataract with diabetes, and sometimes they may have color blindness. So these are all things or there could be macular edema. So the patients will have loss of vision. Loss of vision. Because of the loss blood in the eye. Neovascularization.
neovascularization, or sometimes the blood loss is there in the eye, that is bleeding into the Hemorrhage. retina. Okay, Retina. vitreous hemorrhages can cause loss of vision. This would be for one complication, that is retinopathy. Yes, Then we can ask for stroke. Did you have you been admitted anywhere in the hospital for any problem? Have you been admitted for heart disease? Have you ever been feeling a numbness or tingling sensation, pinpricks in the foot or in the hands? Then these are all neuropathic features of neuropathy. Then heart, like we can have a history of heart attacks. Then how to find out the evidence of kidney disease? We can find out the evidence of kidney disease by asking them periorbital puffiness, swelling of the feet, okay, or distaste to the foot, or sometimes they have decreased urine output, or the same medication which they were using becomes very responsive. Like suppose 1 milligram glimepiride becomes hypoglycemic for them, which was not there for some time back. So the drug becomes more effective. Okay, because of the renal dysfunction, the drug is being not excreted, and drugs increases the duration of action. So, and there are these are the vascular, microvascular and macrovascular complications. Necrosis. Then there could be joint disorders like limited joint mobility. They can have limited joint mobility or osteoarthritis. So these are the problems they can have. Then females may have cancers like uterine cancers can be there with diabetes. So infections, patients may have infections. So we have to, once he has presented with frequency of urine, so we may ask him the sensation of burning, fever with that, because if that is there, then we are dealing with a urinary tract infection in an uncontrolled diabetes. Yes, sir. Okay, so these are the parts of the history we should try to find out with the patient, that once they have come to us, then they also should tell us these things. Okay, and once we are counseling them for history, then we also should know about the adherence to medication, because adherence to diet and medication is very much important. Because once we tell them what to do, and if they do not adhere to our recommendations, it is a futile exercise to devote time for them. So we should also ask them how much are they prepared for changing the basically changing their behavior towards control of diabetes. So all this is part of history taking. Yes, sir. Okay, carry on. Now, so we know that this person did not have these complications and only was having uncontrolled diabetes. And did he follow or did he not follow? Yeah. He followed to me, sir, every time. Actually, sir, his fasting glucose is 244 and postprandial is 368. Yeah. Sir, his fasting glucose is 244 on medication, and his postprandial is 368 when he comes to me 10 days back. When he came to you, जब वो आपके पास आया था, तब उसके पास 248 फास्टिंग था. Yes, sir. तो अब हम एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. हम एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं? तो एग्जामिनेशन में उसके सर LFT KFT मैंने कराया, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल. This is the this is an investigation.
आपने Yes, investigation. फिजिकल एग्जामिनेशन क्या किया? Physical examination, height, weight, उसका height sir 5 feet 4 inch and weight is 78 kg. He is obese. नहीं, अभी इसको how we will call him obese? इसको obese करने का क्या क्राइटेरिया है? सर BMI के लिए सर BMI 24 से above है तो सर BMI कैसे निकालते हैं? BMI सर 28 सर वेट बाय हाइट का मीटर स्क्वायर। तो हाइट इन मीटर्स है, आपने अभी फीट में लिया है। हाइट इन मीटर आपने फीट एंड इंचेस में लिया है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट में लिखा करेंगे। है। हाँ, उसको फीट एंड इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर्स। तो सपोज ही इज अ केस 70 kg and his height is 1.54 78। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम लोग BMI निकालेंगे। हमारा आइडियल BMI जो होता है वो 18.5 to 23 है। 23 ठीक है, तो हमको आइडियली 20-21 के अराउंड BMI रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको टारगेट वेट निकालना है। और हाँ गुड। BP से 130/82 थी and pulse rate is 78 per minute. His respiration rate is 18 per minute. And on CVS examination, M1, M2, S1, S2 is normal and no any added sound. And his pulmonary examination is also normal, sir. No any defect or ulcer or anything in the body, any ulcers. Any non-healing ulcers is not present. And skin, breast, everything is normal, sir. All the systems are normal except his problems of diabetes. Now, sir, I have investigate him for the various blood examination. His fasting blood sugar is 244 mg/% and postprandial is 368 mg/%. LFT is normal, KFT is normal. Lipid profile is LDL is just above the normal, about 132 mg/dL. LDL cholesterol. His HbA1c sir 8.4%. HbA1c is 8.4%. So sir means ECG sir मैंने फिर उसका कराया, ECG is within normal limit. All the waves are normal. आपके जैसे PSC पर क्या क्या चीजें संभव है? ये जो जितने भी टेस्ट आप बता रहे हैं ये सब आपके PSC पर संभव हुआ है? यस सर। अच्छा, मैं PSC सर बाहर सेटअप्स है ना, बाहर सेटअप्स पे कराते हैं सर। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल के बाहर जो प्राइवेट सेटअप्स हैं सर वहाँ होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ मरीज जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे आप अगर लिमिटेड जांच कराना चाहते हैं तो उनसे आप सिंपल जांचों में कर सकते हैं। शुगर टेस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिनिन की जांच कर सकते हैं, और उसमें कभी अगर उनके संभव हो तो लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं। अगर लिपिड प्रोफाइल हमको पैसा अफोर्ड करने में दिक्कत आती है तो जब तक कि शुगर कंट्रोल ना हो उनका लिपिड प्रोफाइल तब तक न करें, क्योंकि डायबिटीज में लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ आएगा ही। अगर हमारा शुगर कंट्रोल करने की वजह से अगर लिपिड प्रोफाइल ठीक हो जाता है तो उसके बावजूद कितना बचता है उसके लिए हम आगे का इलाज तैयार कर सकते हैं, तो जिससे मरीज की पैसे की बचत होगी। और फिर हम सिंपल टेस्ट यूरिन की टेस्ट कर सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन देखना जरूरी होता है, और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अगर जा रही है तो वो भी देखना जरूरी होता है। और ऐसे परिस्थिति में जबकि शुगर कंट्रोल हो तभी हमको प्रोटीन की मात्रा पर कोई चिंता करनी चाहिए, जबकि शुगर कंट्रोल नहीं है तो प्रोटीन का संज्ञान नहीं लेना है। सर मेरा यहाँ पे सर एक क्वेश्चन ये है कि सर इस पेशेंट को सब कुछ मैंने किया और सर ये 1 mg ग्लिमीपेराइड पे ऑलरेडी था पहले से। मेटफॉर्मिन 1000 mg BD ले रहा था
और पायोग्लिटाजोन भी 50 mg ले रहा था, बट इसका शुगर कंट्रोल नहीं। तो मेरा कंसर्न ये है कि इज इट माइट बी अ केस ऑफ टाइप 1 और समथिंग लाडा और मोडी। ऐसा कहने के लिए हमारे पास देखिए, टाइप 1 में जैसे मैंने बताया कि मोस्ट कॉमनली दे विल हैव कीटोन बॉडीज। अगर पेशेंट का 250 से ऊपर आता है तो ये एक सजेस्ट करता है कि बॉडी में इंसुलिन बहुत कम है। जैसा कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताया कि हमारा जब बॉडी में इंसुलिन बनाने की क्षमता जो 100% से 5% से भी कम रह जाती है, बहुत नाम मात्र का इंसुलिन रह जाता है, तब वो हमारी बॉडी शुगर के बजाय कीटोन बनाने लगती है। 20%। तो कीटोन, तो इसलिए अगर हमारा शरीर में इंसुलिन बहुत कम है तब कीटोन बनने लगता है, तो वो एक कंडीशन है जिसमें कि टाइप 1 डायबिटीज सेफली हम कह सकते हैं। बाकी जिनके में थोड़ा बहुत इंसुलिन बनना रहता है और टाइप 1 डायबिटीज है, उनके में हम बहुत डिफिकल्टी होती है टाइप 1 और टाइप 2 कहने में। तो ऐसे केसेस में हम लोग शुरुआती दौर पर ओरल ड्रग देते हैं। और जैसा कि आपने पूछा मोडी के लिए, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज के लिए, तो ये बेसिकली कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ तो टैबलेट से कंट्रोल रहते हैं, कुछ के लिए सीवियर फॉर्म्स हैं जो इंसुलिन से ही कंट्रोल होते हैं। मोटे तौर पर ये वाले जो डायबिटीज होती है 25 साल की उम्र के आसपास शुरू होते हैं, 5-6 महीने तक तो ये टैबलेट से कंट्रोल रहते हैं, फिर बाद में इनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। कुछ छोटे भाग के बॉडी जो होते हैं उन लोगों में टैबलेट पूरे जिंदगी काम करती है। तो जब तक टैबलेट काम करे तब तक हम लोग उसको उसमें भी पारिवारिक बीमारी होती है ये डायबिटीज, और उनके अंदर 2 या 3 जनरेशन्स में मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज भी जनरेशन्स में मिलती है। तो कई बार उन लोगों को हम लोग अगर स्पेसिफिक टाइप है तो मोडी कहते हैं, और जो मल्टी पॉलीजीनिक है वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। सर मैंने लेकिन हिस्ट्री लिया, उनकी फैमिली में उनके फादर को नहीं है डायबिटीज और उनकी मदर को है, मदर के फादर को नहीं था सर। हाँ, तो सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चलता है, मोदी तो सर ऑटोसोमल डोमिनेंट चलता है, तो उसको हम रूल आउट कर सकते हैं यहाँ से सर? अब इस केसेस में मैटरनल डायबिटीज भी, मैटरनली इनहेरिटेड डायबिटीज भी होती है। तो होने को इनको ये भी, वो भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज बोलते हैं उसको। तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज भी हो सकती है। और अगर उनके कई बार ऐसा होता है कि एक फैमिली में जनरेशन्स में डायबिटीज नहीं होती, किसी जनरेशन में नहीं होती, तो अगर उनके और पीछे जाए तो टाइप 2 डायबिटीज के केसेस होंगे। तो चूंकि हमारे देश में अभी तक न जांच और उसके हिस्ट्री मिलना मुश्किल होता है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिसकी फैमिली में 1-2 लोग मधुमेह के शिकार हैं तो उनके टाइप 2 डायबिटीज ही कह सकते हैं। सर इसमें सर एक डायबिटीज लाडा टाइप होता है 1.5 कहा जाता है सर, हाँ, उसमें उन लोगों को कहा जाता है जैसे जिनके अंदर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप तो हो रही है, बहुत तेजी से नहीं डेवलप हुई है, धीरे धीरे करके उनका लॉस ऑफ इंसुलिन हो रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि 5% हो रहा है, लेकिन 100 से 5% आने में उनको कोई टाइम लग रहा है। अगर उनको 4 साल 5 साल लग जा रहे हैं 100 से 5% आने में, तो उन 4-5 सालों में आपको महसूस होगा कि वो बहुत मामूली शुगर बढ़ा हुआ है, तो उनको हम लोग लाडा कह सकते हैं। सर तो इसमें सर मैंने ग्लीमीपेराइड उसको एडवाइस किया, 2 mg बीडी किया हुआ है, मेटफॉर्मिन को 1000 mg बीडी किया हुआ है, और पायोग्लिटाजोन को ऐड किया हुआ है सर। तो बट मुझे सर एक रिस्क ये लगता है, वो हाइपरटेंसिव भी है पेशेंट, तो सर हाइपरटेंसिव का अभी वो ऑन टैबलेट है, तो सर क्या पायोग्लिटाजोन सर थियाजोलिडोन सर एडवाइजेबल होता है कार्डियक पेशेंट्स में, या मुझे उसके लिए कोई दूसरे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पे शिफ्ट करना चाहिए? पायोग्लिटाजोन एडवाइजेबल है, अभी वो यंग है, और उसमें हम लोगों को पायोग्लिटाजोन
के साथ एक सतर्कता बरतनी चाहिए कि पेशेंट से कहें कि अगर कभी आपको पेशाब में स्मोकीनेस नजर आए या ब्लड नजर आए तो उसकी सतर्कता से हमें बताएं, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले आपको पता होगा कि पायोग्लूटाजोन का नाम ब्लैडर कैंसर में आया था। अभी कुछ उतना पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। और दूसरी चीज ये कही गई कि पायोग्लूटाजोन का इस्तेमाल 28 ग्राम टोटल डोज के बाद नहीं करना चाहिए। तो कुछ दिन तक तो ये दवा मदद करती है, पर उसके बाद जब मदद नहीं करती तो हम लोग बंद भी कर सकते हैं। पायोग्लूटाजोन से फीमेल्स में थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क है, तो जो एल्डरली फीमेल्स हैं उनको हम लोग नहीं देते हैं। और जहां तक हार्ट डिजीज की बात है तो वहां हम लोग NYHA दैट इज क्लास 3 क्लास 4 को नहीं देते हैं, 1 और 2 को दे सकते हैं। और ब्लड प्रेशर के बाद अगर पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज भी है और कंट्रोल है तो उसका कार्डियक स्टेटस नॉर्मल होगा मोस्ट लाइकली, तो उसमें NYHA क्लास 1 ही होगा। सर इसमें ग्लिमीपेराइड 2 mg BD एडवाइजर 2 mg BD से टोटल डे 4 mg दे सकते हैं डे पर डे? हाँ, या फिर इसको ग्लिपिजाइड या ग्लिक्लाजाइड भी शिफ्ट करना चाहिए? मोर और लेस ये दवाइयां इक्विपोटेंट है, एक ही जैसा काम करती हैं। और जैसे आपने देखा कि ग्लिमीपेराइड का मैक्सिमम डोज 8 मिलीग्राम है, पर ये देखा गया है कि अगर आप ये ओरल ड्रग्स जो सल्फोन्यूरिया की हैं उनका 50% डोज आप पहुंच जाते हैं तो 50% टू 100% डोज में बहुत मामूली बदलाव होता है असर में। तो अगर 4 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम तक पहुंचते हैं तो कोई मेजर बदलाव नहीं होता। तो 4 मिलीग्राम तक हम लोग मोस्टली इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट लाइक इंसुलिन या और ड्रग्स ऐड करते हैं। अब मरीज का खान पान और उसकी दिनचर्या ये बहुत डिसाइड करता है कि हमारी दवा की डोज क्या होगी। अगर पेशेंट खाने में परहेज नहीं करता तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दवाइयां देनी पड़ती हैं, और कई बार हम उस दवा की मात्रा से भी शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब मरीज पूरी तरह से खाने पीने पर कोई रोक नहीं रखता तो हमें शुगर कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये होती है कि अनियमित दिनचर्या हो मरीज की और अनियमित खाना पीना हो, किसी दिन मीठा खा लिया, किसी दिन नहीं खाया, किसी दिन 2 रोटी खाई, किसी दिन 1 रोटी खाई। आपकी मात्रा, दवा की मात्रा तो निश्चित है, लेकिन खाने की मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगी तो कभी कभी शुगर लो होने का भी खतरा रहता है, और जो हाई डोज पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देन उस समय दवा की पोटेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर मामूली अंतर भी होता है खाने पीने में तो शुगर घट जाती है। कई बार जो एल्डरली लोग होते हैं उनके में 4 मिलीग्राम तक हम लोग ग्लिमीपेराइड देते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि आज आधी रोटी नहीं खाएंगे या 1 रोटी नहीं खाएंगे, कम कर देंगे, भूख नहीं लग रही, पसंद नहीं आया, तो उस परिस्थिति में शुगर की मात्रा कम हो सकती है। तो डोज की रिक्वायरमेंट हमारे ग्लूकोज कंट्रोल कितना अचीव करते हैं उस पर निर्भर करता है, और हमको समय समय पर इसका फॉलो अप करना चाहिए। और मरीज को इसमें सहभागी देने के लिए उनसे अगर आप हफ्ते हफ्ते उनको बुला सकते हैं तो पिछले हफ्ते का क्या खाना पीना था और किस में क्या खाया, तो उससे क्या होता है कि वो उनके नजर में आता है कि हाँ हमने गलती की है। तो जहां तक गलतियां बचेंगी डाइट में, डाइट रेस्ट्रिक्शन होगा, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, तब आपका ग्लूकोज कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। तो मैंने पेशेंट को इस पेशेंट जिसके केस प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको मैंने डाइट पूरी दी हुई है, डाइट कंट्रोल के लिए डाइट चार्ट बना के दी हुई है उसको।
सनफ्लावर ऑयल दिया हुआ है कि सनफ्लावर ऑयल लेना है लेकिन थोड़ा लेना है, और मल्टीग्रेन आटा के लिए बोला हुआ है, ब्राउन राइस के लिए बोला हुआ है, सब कुछ सर मैंने दिया हुआ है, पर फिर भी सर इसका शुगर जो कंट्रोल है इतने मेडिसिन पे नहीं हो रहा है। 4 ग्राम ग्लिमिपेराइड और 5 ग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन 2 ग्राम डेली पे, सर ये नहीं हो रहा, तो क्या मुझे सर इस पे SGLT2 या कैनाग्लिफलाजोन ये डापाग्लिफलाजोन सर ऐड करना चाहिए, या इसको इंसुलिन पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए सर मुझे कॉम्बिनेशन में? हमें ड्रग ट्रायल देना चाहिए, और आप सही कह रहे हैं कि इसमें ग्लिफ्लोजिन दे सकते हैं, और DPP4 इनहिबिटर भी विल्डाग्लिप्टिन की आपने बात की थी कि विल्डाग्लिप्टिन दे रहे थे, और 50 mg विल्डाग्लिप्टिन ओडी दे रहा हूँ सर जी 50 mg सर विल्डाग्लिप्टिन ओडी दे रहे हैं इसको मॉर्निंग में। इसको मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, BD डोज है, फुल डोज दीजिए, और उसके बावजूद अगर कंट्रोल है और उन्होंने पूरा डाइट रेस्ट्रिक्शन किया है, तो फिर आप इंसुलिन ऐड करने के लिए उनको सजेस्ट कीजिए। सर या फिर इसका सर रेडियो इम्यून ऐसे इंसुलिन के लिए कराना चाहिए मुझे भेजकर वाराणसी में या किसी हायर सेंटर पे? क्यों आप क्यों कराना चाहते हैं? जब शुगर बढ़ती है तभी, जबकि बॉडी में इंसुलिन नहीं होती है, आप उसकी जानकारी लेकर क्या करेंगे? सर ये इसको टाइप 2 और या टाइप 1 से सर या लाडा से मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्या एडवांटेज मिलेगा उससे आपको? मरीज को क्या एडवांटेज है? सर मरीज को एडवांटेज तो नहीं मिलेगा सर, मेरे लिए सर थोड़ा सा आपके लिए भी क्या एडवांटेज है? आप टाइप 1 कैसे कर पाएंगे? पेशेंट को अगर इतने दिन तक ओरल ड्रग हुआ है, तो आइदर या तो मोडी है या टाइप 2 है। टाइप 1 की संभावना बहुत कम है। यस सर, ओके सर। उसके लिए इंसुलिन ऐसे के बदले अगर हम उसमें भी हम चाहते हैं जानना, तो हम लोग सी पेप्टाइड टेस्ट कर लेते हैं मिक्स्ड मील के बाद। आप रेगुलर खाना खिलाइए, उसके 1 घंटे बाद आप सी पेप्टाइड टेस्ट कर लीजिए, और उससे पता चल जाएगा कि लेवल ऑफ सी पेप्टाइड क्या है। ओके सर, डेफिनेटली, थैंक यू सर। Anybody else wants to put up questions? सर मेटफॉर्मिन, जब सर मेटफॉर्मिन हम दे रहे हैं सर, तो मेटफॉर्मिन में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? मेटफॉर्मिन सर जैसे ड्रग्स तो हम लोग देते तो हैं सर, बट इसका कॉन्ट्रेंड इंडिकेशन पर्टिकुलरली क्या है कि मेटफॉर्मिन इस स्टेज में नहीं देना है? जैसे लीवर किडनी फेल्योर है सर, तो किडनी फेल्योर में किस केस में सर कितना क्रिएटिनिन है तो मुझे मेटफॉर्मिन स्टॉप कर देना चाहिए उसको फॉलो अप में? आजकल क्रिएटिनिन क्लियरेंस का कई सारा ऐप आता है, आप ऐप डाउनलोड करके और उसके बाद उसका पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस निकाल लीजिए, और उसके हिसाब से 45 से नीचे आपको नया पेशेंट शुरू नहीं करना है मेटफॉर्मिन का, और अगर पेशेंट ऑलरेडी मेटफॉर्मिन ले रहा है तो 30 के नीचे बंद कर देना है। सर और सर ये एक पेशेंट के लिए सर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में सर क्या क्या ड्रग मोनोथेरेपी में क्या यूज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन थेरेपी में सर कौन से ड्रग को प्रेफरेंस देंगे हम? मेटफॉर्मिन और या सल्फोनिल यूरिया हो गया, या SGLT2 हो गया, DPP4, इसको जब प्रेफरेंस वाइज अगर हम रखते हैं नॉर्मल पेशेंट्स में, तो प्रेफरेंस किसका रखते हैं जिसका साइड इफेक्ट सबसे कम हो और उसको सेफली दे लंबे समय तक मैक्सिमम पेशेंट्स को चला सकें सर? अगर पैथोफिजियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग को जैसे डापाग्लिफ्लोजिन है, मेटफॉर्मिन है, और DPP4 इनहिबिटर्स है, वोगलिबोज है, इस तरह की ड्रग्स जो कि हमारे इंसुलिन के एक्शन को सपोर्ट करती हैं, उनको दे सकते हैं। बट कॉस्ट भी देखना चाहिए मरीज के लिए, और मरीज जितना अफोर्ड कर सके। अगर अफोर्डेबिलिटी इशू है तो सल्फोनिलूरिया आज के दिन भी सबसे चीपर है, और ग्लिबेनक्लेमाइड सबसे चीपर मॉलिक्यूल है, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो ग्लिबेनक्लेमाइड अगर इस्तेमाल करते हैं, हम लोग आमतौर पर 60 इयर्स के ऊपर ग्लिबेनक्लेमाइड नहीं यूज करते हैं, और ग्लिमेपेराइड भी 60 इयर्स के ऊपर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये
लॉन्ग एक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। ग्लिबेनक्लेमाइड का जो मेटाबोलाइट है वो भी इफेक्टिव होता है, तो इसलिए पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसको लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे केस में पेशेंट को हम लोग जो 60 प्लस होते हैं उनको कम यूज करते हैं। तो 60 से नीचे वालों को अच्छा इफेक्ट है ग्लिबेनक्लेमाइड का, तो और चीपर भी मेडिसिन है तो इफेक्टिव रहता है। ओके सर। और सर SGLT2 अगर हम किसी पेशेंट को सर एडवाइस कर रहे हैं SGLT2 में सर उस पेशेंट को और क्या प्रिकॉशंस के लिए बता सकते हैं? जैसे SGLT2 सर यूरिनरी एक्सक्रीशन कराता है शुगर का, तो पेशेंट से आप पूछ के रखिए कि आपको कोई पेशाब में जलन है, पेशाब में कोई तकलीफ है, अगर कोई एल्डरली है तो उसको प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और कोई ऑनगोइंग यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है, पेशाब के रास्ते बेलोनोपोस्थाइटिस है कि नहीं है, या पेरिनियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो इन सब बातों, और पेशेंट गांव में जैसे लेडीज को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में अगर टॉयलेट ज्यादा परेशानी है तो देन वी अवॉइड कि, और हम लोग गर्मी के दिनों में उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें ग्लूकोज के साथ साथ पानी का भी लॉस होता है, तो पेशेंट को एडिशनल 250 ml वाटर पीने की हिदायत देते हैं कि अदर्स पाव भर पानी और पियो। ओके सर। और सर वोगलीबोज जो है सर वो सर ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करता है, किसी किसी पेशेंट में सर डायरिया कॉज कर सकता है, तो सर उसके लिए कोई स्पेशल मेडिकेशन करना है उस डायरिया के लिए या वो नॉर्मली? नहीं, बंद कर देना पड़ता है क्योंकि देन उसके लिए हमको एडिशनल ड्रग कोई है नहीं जो ऑस्मोटिक डायरिया रोक सके। अगर पेशेंट को पेशेंट उसको नहीं ले पा रहा है, उसके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम लोग उसमें अवॉइड करते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर क्रिएटिनिन 1.3 1.4 से ऊपर हो जाए तो एकार्बोज या वोगलीबोज नहीं देना चाहिए। ओके ओके। और तीसरी बात यह है कि अगर पेशेंट को एकार्बोज या वोगलीबोज दे रहे हैं और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो उस समय उसको ग्लूकोज पिलाइए, ना कि चीनी। चीनी का ब्रेकडाउन नहीं होता है, चीनी इज अ डाइसैकेराइड। यस सर। और डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन नहीं करने देगा एकार्बोज, तो इसलिए उसको जब अगर 4-6 घंटे के अंदर आप दे रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, तो ग्लूकोज देना चाहिए उसको। सर अगर हमारे पास सर पेशेंट कोई कोमेटोज पेशेंट आता है सर, उसको स्वेटिंग हो रही है और ये सब और सर अगर मैं उसको फर्स्ट साइट में ये डायग्नोज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हाइपोग्लाइसीमिया में है या हाइपरग्लाइसीमिया में है, तो सर मुझे यही मैंने बुक्स में भी देखा है कि उसको ग्लूकोज दे देना चाहिए, एटलीस्ट 25% ग्लूकोज दे देना चाहिए। बट सर अगर उसका ग्लूकोज मैं फिर अगर चेक कराना तो आफ्टर ब्लड इन्वेस्टिगेशन अगर उसका ग्लूकोज सर 500 से एबव आ रहा है, तो सर उसमें सर IVM इंसुलिन दें या सबक्यूटेनियस इंसुलिन देना चाहिए सर उसमें उस केसेस में? देखिए ऐसा है कि जब भी आप ब्लड में इन्फ्यूज करते हैं रेगुलर इंसुलिन नहीं, आप ग्लूकोज देते हैं तो हमेशा ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए अपोजिट लिम से शुगर नापने के लिए ब्लड निकालिए, क्योंकि सेम लिम से ग्लूकोज नहीं निकालना है। और दूसरी बात, अगर आपको ने ग्लूकोज दिया है और उसके बाद उसका 500 हो गया है, तो आप रिड्यूस करके देखिए कि क्या ग्लूकोज वैल्यूज चेंज होती हैं क्या। अगर आपके 25% डेक्सट्रोज के रोक देने से उसका शुगर कम हो जाता है तो इंसुलिन नहीं देना है। अगर नहीं होता है सर फिर अगर उसके बावजूद आपने तो अभी एम्पिरिकली ग्लूकोज दिया था कि देखते हैं, हो सकता है पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में था, अगर आप चेक कर सकते हैं तो चेक करने के बाद दीजिए, ग्लूकोमीटर है तो। नहीं है, आपने एम्पिरिकली उसको ग्लूकोज 25% डेक्सट्रोज दे दिया है और उसके बाद भी उसकी स्थिति नहीं सुधरी, तब तक आपके पास ग्लूकोज की रिपोर्ट आ गई, उसमें 500 है, आप उसको रोक दीजिए डेक्सट्रोज को, और फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट कीजिए। अगर मान लीजिए उसका बढ़ा हुआ शुगर फिर भी आता है, तब इंसुलिन शुरू कीजिए। 500 रिपोर्ट आने के बाद आप चाहें तो उसको सलाइन दे सकते हैं, जिससे कि
उसके अंदर का डिहाइड्रेशन कम हो, क्योंकि 500 शुगर भी अपना डिहाइड्रेशन करेगी। हाइपरऑस्मोलर, यस सर। सर तो ये अगर हम लिस्प्रो या स्पार्ट शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर दे रहे हैं या फिर सर रेगुलर इंसुलिन दे रहे हैं आईवी, तो सर दोनों की इफेक्टिव टाइम ऑफ ऑनसेट में क्या डिफरेंस होगा सर? ज्यादा फायदा आईवी रूट से देना ज्यादा बढ़िया है या सबक्यूटेनियस रूट से? आईवी रूट से सब तरह की इंसुलिन एक जैसे काम करती है, जो कि हम आईवी दे सकते हैं। आईवी में लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन और ये रेगुलर इंसुलिन सब एक तरह से काम करती है। एनपीएच को आईवी नहीं देना है, ग्लार्जीन को आईवी नहीं देना है, डेग्लूटेक को आईवी नहीं देना है, डेटिमर को आईवी नहीं देना है। केवल हम लोग लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन और रेगुलर इंसुलिन ही आईवी दे सकते हैं। कॉस्ट ऑफ थेरेपी कम करने के लिए रेगुलर इंसुलिन ही ज्यादा सही रहेगा आईवी देने के लिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर प्रकाश जी, बहुत बढ़िया से इन्होंने बेनिफिट लिया है आईएमएस का। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेडिकल ऑफिसर से कि वो भी इस तरह से केस प्रेजेंट करें और क्वेश्चंस करें, डिस्कस करें, अपना वीडियो ऑन करें so that और अपना वीडियो भी ऑन करें, क्योंकि वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इंटरेक्शन अच्छा होता है। एंड इट इज वेरी गुड प्रेजेंटेशन बाय प्रकाश पांडे जी एंड डिस्कशन बाय प्रकाश पांडे जी. So at the end, I would like to inform that our next session is on 16th of August. The topic is non-pharmacological management of diabetes. So I request all medical officers to join sharply at 2:15 p.m. And I would like also to request to prepare a case. Anyone can prepare a case to present on 16th of August. And now a link is shared in the chat box by Eco India. All are requested to kindly click on the link and give your feedback. नेक्स्ट टाइम अगर इन लोगों को दिक्कत है तो 3 बजे से रखें। Yes sir, 3 बजे is okay sir. 3 p.m. is okay sir. Okay. Then we will keep these sessions every Monday at 3 p.m. So it is requested to kindly click on the link of shared by Eco and please give your valuable feedback. We will meet all of you on 16th of August at 3 p.m. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Sir, we will close the session in 5 minutes, and you all are requested to fill the feedback form. The link for the feedback form is in the chat box, and you can log out of the session after filling up the feedback form. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you sir.